हाय एवरीवन, आज है हमारा डे 3 इन पेरिस और आज की हमारी एक्टिविटी है हॉप एंड हॉप ऑफ पेरिस अट्रैक्शंस एंड लैंडमार्क्स टूर्स थ्रू दिस बस। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग निकल गए हमारा फर्स्ट विजिट विच इज़ द फेमस ओपेरा पैलेस गार्नियर। और जो भी हमारे प्लेसेस के हम जो जहाँ पे रह रहे थे उसमें 1 किलोमीटर के अराउंड था, बट स्टिल वी टुक द हॉप एंड हॉप ऑफ बस टूर बिकॉज इससे आप ऑलमोस्ट पूरा पेरिस घूम सकते हो। ये बस कवर करती है ऑल ओवर द पेरिस फेमस लैंडमार्क एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सिटी। हम लोगों ने सारे लैंडमार्क्स के टिकट ऑलरेडी एडवांस में बुक कर रखे थे एंड इवन ये टूर जो थी उसकी भी टिकट हम लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर दी थी। सो आई एक्सप्लेन यू अहेड कि व्हाट हाउ एंड वेयर वी परचेज द टिकट और इस पर कितना कॉस्ट आया था एंड व्हाट काइंड ऑफ अ टिकट शुड यू परचेज टू make your day better. So this is a opera. As I mentioned earlier, हम लोगों ने ओपेरा और सीन रिवर क्रूज़ का जो टिकट था वो कॉम्बो में ले लिया था एंड वो बहुत सस्ता आया था। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप था विजिटिंग फेमस ओपेरा। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इंटीरियर इज सो क्लासी एंड अट्रैक्टिव। यहाँ पे हाफ ऑफ द एमिली इन पेरिस की शूटिंग हुई थी और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। आई डोंट नीड टू इवन एक्सप्लेन हाउ दिस प्लेस इज़ फेमस। पैलेस गार्नियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ओपेरा इन द वर्ल्ड और यहाँ पे विज़िट के लिए बहुत दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर एवरी टूरिस्ट, ओके, बिकॉज यू विल जस्ट स्टन बाय द ब्यूटी। इतना ब्यूटीफुल था। पीपल जस्ट कैप्चरिंग। दिस इज़ अ मेन ओपेरा हॉल और अगर आपको शो देखने हैं यू कैन कम इन द इवनिंग एंड परचेज द टिकट। This is just you can purchase the book, audio or whatever the video from the famous opera which is done so far. You will just look everywhere. You can see only beauty, grand staircase, good paintings on the ceilings and everything is just charming. So we decided to visit all the famous landmark on weekdays because आपको थोड़ा रश comparatively weekend बहुत कम मिलेगा. You can enjoy properly and have a great experience visiting different places. Little bit lines and everything was sorted. So I will recommend always to visit every landmark on the weekdays and comparatively weekend आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा and you will not stuck in the lot of lines. Look at this small road. इतनी छोटे से जगह से हमारी इतनी बड़ी बिग बस गई थी. This is the entrance of famous Louvre Museum of the Paris. The one of the most famous museum in the world. Everybody knows the Louvre, famous Mona Lisa. Look at how big it is. This is a best place. You will just stunned by the space, architecture over here. And guys, if you can see, it was a lot of rush. Even on the weekdays you can find a lot of rush to visit this museum. So what we did, we purchased the skip the line ticket. Okay, this is a must. I will recommend. Otherwise आप यहाँ पे एक घंटा भी खड़े रहोगे फिर भी आपका नंबर नहीं आएगा. You can just see how much line it was and because of skip the line we were inside of the Louvre Museum within a 1 minute. I will must recommend you कि ये म्यूज़ियम के लिए आप skip the line टिकट लो ताकि आपका visiting hours कम हो जाए and you will enter. This is a special entrance of the skip the line ticket. I know it will cost you little bit extra 1,000 rupees, but what we did now, we did smartly कि we purchased the combo ticket. Louvre skip the line के साथ हम लोगों ने ले ली थी आईफिल टावर विजिट के लिए. Okay, so we didn't take any separate tickets.
सो इसकी वजह से हमें थोड़ा डिस्काउंट में भी आया था, प्लस वी अप्लाइड मल्टीपल डिस्काउंट वाइल द परचेज। सो आई सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ 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 स्किप द लाइन टिकट ले लीजिएगा, अदरवाइज़ आप एक डेढ़ घंटा भी रहोगे, आपका नंबर नहीं आएगा। इट विल टेक मोर देन 2 hours to enter in the museum. Guys, on Monday we visited almost like famous landmarks including Louvre, Opera, Arc de Triomphe, and different famous landmarks of the Paris, like the Louvre Bridge and everything, the major attraction of the Paris. But we didn't visit Eiffel Tower. There was another reason, because हम लोगों ने वो last डे के लिए रखा था टू एंटर इनटू द आईफिल टावर। वी सॉ द आईफिल टावर, बट हमें प्रॉपरली सब जगह पे प्रॉपर टाइम स्पेंड करना था। वी डोंट वांटेड टू गेट रश। यू कैन विजिट आईफिल टावर इन द सेम डे ऑल्सो, बट वी वर टेकिंग आवर टाइम एंड enjoying full day properly by visiting each and every places, and we don't wanted to rush onto the anything. So we started with the opera. We spent proper like 1.5 hour there, 2 hour there. Louvre, it will take you at least 2.5 hour to visit properly each of every corner of this museum. Okay, because this is really beautiful museum. I will must say कि you take your time and visit here, because दुनिया भर के अलग अलग like paintings, different type of sculpture you can see here. It's a very beautiful place. And the next is the one of the famous painting of Mona Lisa is in this museum, and we studied from the school, and finally we saw this painting, the Mona Lisa painting from the great Leonardo Vinci. Guys, ये painting जो है Mona Lisa की, it worth of $860 million. Think what we just saw. अब जैसे म्यूज़ियम के अंदर आओगे, they will give you a map so you can navigate each and every corner, because it's a very huge museum. You can see the ancient 18th century French classicism, then medieval Islamic arts, Dutch Renaissance, and different Italian art. Overall the European art cultural, plus different countries representing their arts there. यहाँ पे पेंटिंग का भी different type of the showcasing होता ही रहता है. So what you are going to expect more, like this is a world's largest museum, so definitely. So today we doing Hop of Paris tour, and with this big bus we booked our ticket, and for the full day we will going to different places which is very iconic and famous places in Paris, and we will visit it. So our first was Opera. We visited Opera. Now we are going to the Louvre Museum, and then there is different palaces and pyramids, and then Louvre Bridge, then Arc de Triomphe, then correct me if pronunciation is wrong, but I don't know how to pronounce in French, but I'm trying my best. Then Eiffel, and then next one This is Louvre Bridge. Louvre Bridge, Eiffel, and then there is a total 10 stop. I'll show you and I'll explain you how this will work. So please stay tuned. हम लोग फुल डे लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम द मॉर्निंग आफ्टर द ब्रेकफास्ट. वी डिड अ ब्रेकफास्ट इन कैफेज. आई टोल्ड यू लाइक बिफोर कि वी वांटेड टू जस्ट टेस्ट डिफरेंट फूड एंड सिलेक्टिव कैफ़े. तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर हम लोगों ने लॉर्वे में लंच कर लिया था, बिकॉज देयर इज़ अ गुड इंडियन फूड एंड इवन द कॉम्बो फूड यू कैन हैव. And then we started visiting a different places, which was in the top, like the famous landmark of the Paris. This is Arc de Triomphe. We were literally enjoying our hop and off of tour. हम लोगों ने almost Paris वो बस में 2 बार complete कर लिया था. First what we did now, we visited individual places. Like हम लोग
जैसे we visited Louvre, then we get on the bus, then visited next place like the Arc de Triomphe, and then in the between we used to drop from the places. और लास्ट जो टूर हम लोगों ने लिया था ना, वी सिटेड प्रॉपरली इन द बस एंड वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड द सिटी. मतलब दैट वाज अ सेकेंड राउंड. वी इट take if you are in the bus to complete full round of the city without getting out, it will take you at least 2 hours to 1 and 2 half an hour. This bus tour was a totally paisa vasool and it cost us for both hardly 5,500 rupees. For the shopping, which is sham palaces, I really sorry if I'm pronouncing wrong, but I'm trying my best again. So this is known as the most luxurious trade of the world, जहाँ पे आप सिर्फ शॉपिंग ही करते हो. Like all kind of luxury shop, from you can found here. It's like a long cycle track. Arc de Triomphe is there, and all kind of luxury brands houses is here. It's a beautiful area. ये एरिया आईफिल टावर से इतना नज़दीक है कि यू कैन सी लिटरली आईफिल टावर फ्रॉम द एवरी स्ट्रीट ऑफ द कॉर्नर्स. We did little bit luxury shopping, then we went to the most famous mall, Galerie Lafayette, which is near our place. This mall is famous for their luxury and branded stores, and it's worth visiting. It's very beautiful. And after that we had our dinner and done for the day. So this was how our full day 3 we spent through the hop and hop tour and little bit of shopping. Stay tuned guys, we are going to share you the most beautiful day of our life in the next vlog, which is Disneyland. So please stay tuned. Bye, thank you for watching and don't forget to subscribe, like and comment.